बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। 10 क्लास फ़िज़िक्स के इंतहाई अहम सवालात के साथ मैं आपका मेज़बान MNA गुम्मन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा ये मवाद पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, डेरा गाजी खान, साहिवाल, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, बहावलपुर और आज़ाद कश्मीर बोर्ड के लिए यकसा मुफीद है। अल्हम्दुलिल्लाह दहम के रिज़ल्ट ने नहम और दहम के रिज़ल्ट ने साबित किया कि हमारे गेस्ट पेपर पंजाब में सबसे ज़्यादा मकबूल और कामयाब हैं। जी, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी हिदायत है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर हमारे चैनल MNA गुम्मन को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन लाजमी दबा दें ताकि हमारी आइंदा वीडियो से आप बर वक्त इस्तेफ़ादा कर सकें। जी, शुरू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन आंसर से। और इसमें सबसे पहले यूनिट नंबर 10 के शार्ट क्वेश्चंस हैं जो कि सबसे अहम हैं। उसमें इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है। डिफाइन सिंपल पेंडुलम एंड राइट द फार्मूला ऑफ इट्स टाइम पीरियड। डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन and discuss characteristics of simple harmonic motion, wave motion and types of waves. Distinguish between longitudinal and transverse waves with example. Differentiate between mechanical and electromagnetic waves. Unit 11 है. Mention the characteristics of sound, loudness of sound and factors depending upon. Differentiate between frequency and pitch of sound. What is the range of audible frequency of sound? Define intensity of sound and write down its unit. What is meant by quality of sound? What do you mean by reflection of sound? On what factor does the loudness of sound depend? Unit 12 है. Define spherical mirror, how it is formed, what are types of spherical mirror. Differentiate between radius of curvature, center of curvature and pole of mirror. Define refraction of light and laws of refraction of light. Define Snell's law, write its formula, what is meant by the total internal reflection. Define critical angle and also write conditions for total internal reflection. Define the following term applied to a lens: principal axis, optical center and focal length. Define mirror formula. उसके बाद यूनिट 13 है जी. व्हाट इज़ द मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. एक्सप्लेन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म. Is electric intensity a vector quantity? What will be its direction? How would you define potential difference between 2 points? Define its unit. Differentiate between electric field and electric field intensity. Differentiate between volt and farad. Electric field lines and write any two characteristics of electric field lines. Unit 14 है. Electric current and write its formula and SI unit. Differentiate between cell and battery sources of EMF and give example. What is EMF? Write its SI unit. Differentiate between ammeter and galvanic meter. Potential difference, define potential difference and its SI unit and define it. State Ohm's law, also write its formula. What are the limitations of Ohm law? Define resistance, give its mathematical form and describe its reason and SI unit. Ohmic and non-ohmic conductor, state Joule's law, write down its formula. उसके बाद यूनिट 15 है. State right hand rule for straight conductor. Define electromagnet and its pole. What is meant by a solenoid? What do you know about magnetic field of a solenoid? Define electromagnetic induction. What is meant by strength of a magnetic field? What factors affect the induced EMF in a coil? State Lenz's law. Define mutual induction. What is transformer? On what principle it works? Number 16 है. What is meant by electronics? Differentiate between analog electronics. What is meant by analog and digital electronics? What is meant by Boolean algebra? How is it represented? Define logic gates and truth table. What is meant by AND operation? Write the symbol for AND gate. What is meant by OR operation? Write the symbols for OR gate. What is meant by NOT operation? Write the symbol for NOT gate. What is meant by NAND operation? Write the symbol for NAND gate. यूनिट 17 है. उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन. डिफरेंस बिटवीन IT एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. व्हाट डू यू नो अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, information communication technology? Write the names of component of CBIS. What do you mean by flow of information? What is internet? Write names of 4 web browser. What is difference between web browsing and email? और यूनिट 18 है. डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. डिफाइन आइसोटोप. राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी.
What is meant by radioactive element? Give two examples. What is meant by background radiation? Write the causes of background radiation. What are the uses of radioisotopes in medical treatment? Differentiate between nuclear fission and nuclear fusion with chemical equation. Most important long question answer है जी। इसमें सबसे पहले यूनिट 10 से दो पार्ट्स हैं। प्रूव दैट मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और एक्सप्लेन द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यूनिट 12 की बारी है। एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लाइट थ्रू ग्लास स्लैब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल? हाउ वुड यू डिटरमिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब? State the laws of refraction of light and show how they may be determined using rectangular glass slab and pins. Unit 13 है। Define capacitor. Give the construction and working of a parallel plate capacitor. Derive the formula for the effective capacitance of for parallel and series combination of number of capacitor. Write some uses of capacitor. Unit 14 है। Explain Ohm's law. Discuss its mathematical formula and limitations. State and explain Joule's law. Explain parallel circuit of resistor. Also discuss the main features of parallel combination of resistors. Find equivalent resistance of a series circuit of resistors. उसके बाद है यूनिट 15। डिमॉन्स्ट्रेट बाय एन एक्सपेरिमेंट दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक्सप्लेन हाउ यू कैन डिटरमिन द इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी लेंज लॉ। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? राइट इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, आल्सो डिस्कस इट्स टाइप्स। उसके बाद है जी Unit 16। Explain the use of logic gates as safety alarm. Differentiate between analog and digital electronics. Write at least 5 analog and digital electronics, each which are used in daily life. What are NAND and NOR operations? Explain truth table of NAND and NOR gate. Unit 17 है। What is meant by CBIS? Explain its components and their functions. What is internet? Write its services and uses. What is email? Write its advantages. Unit 18 है। Describe the uses of radioisotopes. Define half-life. Explain with example of radium-226. Also draw the diagram of activity of radium. Define nuclear fission and nuclear fusion. Explain with example. उसके बाद है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो इसमें सबसे पहले यूनिट 10 में से 10.1 आपने एग्जाम्पल तैयार करनी है। फिर 11.1 और 11.2 है। यूनिट 12 में से 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.6 आपने तैयार करनी है। 13 में से 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14 में से 14.1, 14.4, 18.1, 18.2। उसके बाद है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें आपने यूनिट 10 में से 10.1 और 10.4 तैयार करें। 11 में से 11.1, 11.2, 11.4, 11.6, 11.9, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.9, 12.10, 12.12 तैयार करें। यूनिट 13 में से 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.7, 13.8, 13.9 और 13.10 यूनिट 10। 14.1, 14.4, 15.1 और उसके बाद 18.2, 18.3, 18.5 और 18.9। शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक और दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।